Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our top today our topic is tropic level and food chain, and it is topic which is related to class 11th EVS subject. आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं और फूड चेन के बारे में हम बात करेंगे आज. तो so far as these tropic levels are concerned, tropic level Tropic level, basically these represents the levels at which an organism obtains the food. Different organisms, they possess different modes of obtaining their foods. Or sometimes we can also say the tropical level represents the position of an organism in a food chain. So since different organisms, they play different roles in a food chain. Accordingly, there are various categories of these tropical levels. So, among them, one is known as the tropic level first. Tropic level first, or T1. The T1 or tropic level first, it is represented by the producers. That means the first tropic level or T1 level, it is represented by the producers. That means the organism which manufacture their own food through the process of photosynthesis. इसी तरह जो ट्रॉपिक लेवल सेकंड, that is T2, or tropic level second or T2, it includes the primary consumers, that is herbivores, which just eat the producers, or which eat the food which is already produced by the producers, or in which is produced at the tropic level first. So it includes the herbivores. इसी तरह tropic level third or T3, it includes the secondary consumers, or we can say the secondary consumers are primary carnivores. That means which feed upon the primary consumers, that is herbivores. And then there is T4, and T4, this includes the secondary carnivores which feeds upon the primary carnivores. इस तरह T5, usually this includes the top carnivores. In case of the terrestrial ecosystem, or in case of the terrestrial food chain, these includes the top carnivores. But in case of the aquatic these food chains, T6 includes these includes the top carnivores. And ultimately there is then T6 or tropic level 6, sixth tropic level, and T6 tropic level 6, it includes the decomposers in case of the terrestrial food chain, but it includes the decomposers in case of the terrestrial food chain, but it includes the top carnivores in case of the aquatic food chains. तो इसी तरह T7 includes the decomposers in case of the aquatic food chains. So these were the few tropic levels. These are the few types of the tropic levels, and these represent basically the position of an organism in a food chain, and basically they represent the levels where an organism obtains its food. So this is regarding a little bit about these tropic levels. Now we will talk about food chains. Basically, in any given ecosystem, the organisms, that is plants,
and animals. They are interlinked in a systematic chain. They are linked by in a systematic chains, and this we can define this food chain as the sequential series of these trophic levels through which the food energy is transferred from producers to consumers to then to decomposers through the phenomenon of eating and being eaten. Through the phenomenon of eat and be eaten is called the food chain. So in this food chain, the phenomena of eat and being eaten here means that an organism which acts as a predator at one trophic level behaves or becomes a prey at the subsequent or the successive trophic level. This is what we can say what is food chain. So far these food chains are concerned, इनकी components कौन कौन से होते हैं? Components of food chain. Basically in a typical food chain, it consists of the producers, that means which synthesize their own food through the process of the photosynthesis. These includes the consumers, they may be of various types: primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers, and quaternary consumers. And apart from that, it also consists of decomposers. This transfer of food energy takes place in the food chain from the producers through various consumers and decomposers. These consumers, they may include the primary carnivores, or they may include the primary consumers, then the primary carnivores, secondary carnivores, tertiary carnivores, top carnivores. तो इस तरह इसमें ये इसके कंपोनेंट्स हैं फूड चेन की. So far as the types of the food chain are concerned, food chain, basically there are three categories or three types of the food chain. One is known as the predator food chain, predator food chains. दूसरा parasitic food chain. तीसरी detritus food chain. पहले हम बात करेंगे what is predator food chain. It is also known as the grazing food chain. Grazing food chain. This grazing food chain, it starts from the grass, from the green plants, we can say, this grazing food chain. Then these green plants, they are taken by the herbivores, which in turn are taken by the consumers. And this grazing food chain, we can quote some examples regarding this grazing food chain. Food chain के बारे में कुछ example यहाँ पे हम quote करेंगे. पहले हम देखेंगे कि एक तो हम example लेंगे from the terrestrial ecosystem या terrestrial food chain. उसमें हम grassland food chain देखेंगे. Grassland food chain. This grassland food chain, it includes the producers,
then the consumers as well as the decomposers or the reducers. देखो अगर हम देखेंगे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे इन केस ऑफ द ग्रॉस लैंड फर्स्ट इट इज ग्रॉस पहली ट्रॉपिक लेवल में यहाँ पे ग्रॉस को हम प्रोड्यूसर कहेंगे इट इज टेकन बाय द रैबिट इसको रैबिट खाएगा and rabbit in turn is taken by fox. तो यहाँ पे फोकस को it is being eaten by the wolf and wolf by tiger. So यहाँ पे अगर हम grassland में देखेंगे it starts from the grass. यहाँ पे ग्रॉस जो है इट बिकॉज इट इज दिस ग्रॉस विच मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इस तरह जो ये ग्रॉस इट इज ईटन और इट इज टेकन बाय द रैबिट. यहाँ पे रैबिट जो हम कहें ये तो हर्बीवोर है और प्राइमरी हर्बीवोर एंड दिस रैबिट इन टर्न इज टेकन बाय और ईटन इट इज ईटन बाय द फॉक्स. फॉक्स यहाँ पे हम कहेंगे इट इज द primary carnivore or secondary consumer. Primary carnivore. Then the wolf, it is tertiary consumer, and the tiger, it is the quaternary consumer, or we can say it is the tertiary carnivore or the top carnivore in this type of food chain. इसी तरह we can quote another example from this aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem. जब हम aquatic ecosystem में हम pond food chain की बात करेंगे pond food chain pond में in the pond food chain we can say here the phytoplanktons they are taken by the zooplanktons and zooplanktons are taken by the primary or secondary consumers. Secondary consumers are taken by tertiary consumers and tertiary by quaternary consumers. हाँ. तो यहाँ पे जब हम phytoplankton जो होते हैं these are the microscopic, these are the floating plants or microscopic algae we can say. They act as the producers. यहाँ पे producer हैं zooplanktons which eat these phytoplanktons. They are known as the primary consumers and these include the jellyfishes, some crustacean larvae, insect larvae, and secondary consumers. These include the hydra and tertiary consumers. हाइड्रा एंड स्मॉल फिशेस यहाँ पे आएंगे. तो इसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर्स में क्या हम बात करेंगे हम इसमें आएंगे लार्जर फिशेस एंड फ्रॉग्स एंड दीज आर ईटन बाय द स्नेक्स by the quaternary carnivore, by the quaternary these consumers, snakes and fish-eating birds. This is another example, that is the pond food chain. तो इसी तरह हम बात करेंगे, this is the first type of the food chain, that is the predator type of the food chain. Next, another type of food chain is the parasitic food chain. दूसरी parasitic food chain, parasitic food chain. इस food chain में क्या होता है? Basically the producers or the consumers,
they become parasitized, and in this type of food chain, food is taken by the small organisms. अगर हम इसमें देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे फ्रूट ट्री की, फ्रूट ट्री मतलब यहाँ पे जो होते हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर टेकन बाय हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स पे parasites, they are taken by parasites, and these are in turn taken by the hyperparasites. अगर हम एग्जांपल देंगे, एक ट्री होता है, मतलब ट्री या फ्रूट ट्री है, इस पे इसके ऊपर मतलब जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं, फ्रूगिवोर्स, fruit eating birds, they take the fruits or they eat the fruits of the tree, and they in turn, or these birds are attacked, or they are in turn this upon these fruit eaten birds or fruit eating birds, the parasites like lice and bugs, they feed upon them, and they in turn are fed upon by the fungi, bacteria, some protozoans. तो इस तरह यहाँ पे जो ये फूड चेन बन गई, इट इज नोन एज द पैरासिटिक फूड चेन, क्योंकि यहाँ पे पैरासाइट्स मतलब जो यहाँ पे जो प्रोग्रेसली जो फूड होता है, दैट इज ट्रांसफर्ड और दैट गेट्स ट्रांसफर्ड into the parasites. This is why it is known as the parasitic food chain. Number third, जो मैंने आपको बताया था, detritus, detritus food chain. It is sometimes known as the saprophytic food chain. In this type of food chain, basically here, this food chain, it starts from the dead and decomposed organic matter of the dead animals and the plants, or dead and decomposed organic matter of plants and the animals. तो फिर that this dead and decomposed organic matter, it is taken by the detrivores or the decomposers, which in turn are taken by the detrivore consumers. They in turn are taken by the other tropical levels of the food chains. यहाँ पे हम एक एग्जांपल कोट करेंगे तो उससे हमें ये क्लियर हो जाएगी डिट्रिटस फूड चेन क्या होती है, सैप्रोफिटिक फूड चेन क्या होती है. तो जहां तक इस डिट्रिटस फूड चेन का ताल्लुक है, it was Held and Odom who has studied the detritus food chain in case of the fallen mangrove leaves in the brackish zone of South Florida in USA. तो उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मतलब डिट्रिटस होता है, यानी कि डिट्रिटस मीन्स dead and decomposed organic matter. It is taken, detritus here includes the fallen mangrove leaves, and other dead bodies. They are taken by the detrivores. Detrivores includes the fungi, bacteria, and protozoans. They in turn are taken by detrivore consumers. डिट्रीवोर कंज्यूमर्स में आते हैं छोटे छोटे मतलब जो इंसेक्ट लार्वे होते हैं, इंसेक्ट लार्वे एंड क्रस्टेशियन लार्वे. दे इन टर्न आर टेकन बाय the small game fish, which in turn are taken, which in turn are eaten by the large fishes.
तो यहाँ पे हमने देखा जो यहाँ पे ये फूड चेन बन गई, इसको हम कहेंगे डिट्रिटस फूड चेन, बिकॉज दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द डिट्रिटस मैटर, दैट इज ऑर्गेनिक डेड एंड decomposed matter of the dead plants and animals, dead animals. तो इस तरह ये अगर हम बात करेंगे जो कि एवरी ट्रॉपिक लेवल किसी भी फूड चेन में, तो उस पे डिकम्पोजर्स दे आर एक्चुअली they are attacked or they are acted upon by the decomposers, and they are converting this organic dead matter into the inorganic into the inorganic components which are back released into the environment for the recycling, for their reuse by the producers. तो इस तरह ये फूड चेन यहाँ पे बनती है. तो these were the few types of the food chain. अगर हम लेंथ ऑफ द फूड चेन की बात करेंगे कि ये एक फूड चेन कितनी लंबी होती है, लेंथ ऑफ द फूड चेन, लेंथ. A food chain may end at the primary consumer level. जैसे कि अगर हम देखेंगे ग्रास को एलिफेंट खाता था, यहाँ पे ये फूड चेन एंड होती है. तो यहाँ पे हम कहेंगे इट में एंड समटाइम्स एट द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल. फॉर एग्जांपल प्लांट को रैबिट खाता है, फिर रैबिट को बियर खाता है, तो यहाँ पे एंड होते हैं. किसी वक्त ये टर्शरी कंज्यूमर लेवल पे एंड होते हैं. फॉर एग्जांपल मतलब प्लांट को रैट खाता है, रैट को फिर वाइल्ड कैट खाता है, फिर वाइल्ड कैट को टाइगर खाता है. इसी तरह ये टर्शरी या कॉटनरी कंज्यूमर लेवल पे एंड होते हैं. सपोज प्लांट को रैट खाएगा, प्लांट को रैबिट खाएगा, रैबिट को फोक्स खाएगा, फोक्स को वुल्फ खाएगा, इस तरह वुल्फ को एंड अल्टीमेटली टाइगर खाएगा. तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इसकी लेंथ होती है it is different in case of the different food chains. तो इसकी लेंथ वेरी होती है. तो किसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ मतलब जो ये होते हैं, सपोज चलो वो हम लेटर ऑन उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये रही रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द फूड चेन. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड चेन क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड चेन. जो फूड चेन है, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट. दैट मीन्स इट ऑलवेज प्रोसीड्स and it always proceeds and it is progressing successfully in a straight line. जो कि इसकी successive level है that are formed in a straight line. So we can say जो food chain होते हैं it is always straight. तो जो ये food chain है इसमें न्यूट्रेटिव इंटरैक्शन होती है. न्यूट्रेटिव इंटरैक्शन among the organisms. यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का यानी इनके दरमियान न्यूट्रेटिव इंटरैक्शन होते हैं. दैट मीन्स दे आर मतलब one at one trophic level the one organism acts as the predator. In the next trophic level it may act as the prey for the other organism. तो यहाँ पे ये कि न्यूट्रेटिव इंटरैक्शन होते हैं. they interact यानी कि यहाँ पे फूड एनर्जी जो है that is transferred in this food chain. तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो ये फूड चेन होती है इसमें रिपीटेड ईटिंग होती है. दैट मीन्स at one trophic level an organism may act as a predator, and at the successive trophic level he may act as the prey, he may become the prey to the other organisms. तो इस तरह हम ये कहेंगे यहाँ पे ये जो है ना रिपीटेड ईटिंग होती है. हाँ, इसमें क्या होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है. दैट मीन्स कि द एनर्जी इट इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन बाय द प्रोड्यूसर्स, देन इट इज ट्रांसफर्ड through primary consumers or herbivores, then to several consumers and decomposers. That means there is a unidirectional, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होती है. दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फूड चेन.
इसी तरह इसका एक है 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल. इन ए टिपिकल food chain there are 4 or 5 tropic levels, but there are certain exceptions. Some food chains may have less than 4 or these tropic levels, or more than 5 tropic levels. Usually, generally, if you look, we can say that there are 4 or 5 tropic levels in a typical food chain. तो इस तरह हम ये भी कहेंगे. तो about एक food chain में about 80 to 90% of energy is lost in the form of the heat through the successive tropic levels. Well, these are the few characteristic features of this food chain. अब हम देखेंगे what are the ecological principles which are derived from these food chains. पहला ecological principle क्या है? वो ये है कि food chain, complete food chain. Food chain is always complete. That is, it starts from the producers through the process of photosynthesis and ends at the decomposers. तो दूसरा इसका हम ये मतलब इसका इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या डिराइव कर सकते हैं. साइज ऑफ द फूड चेन. साइज ऑफ द फूड चेन ये है, जितनी फूड चेन लंबी होगी उतनी उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होगी, यानी कि तो it will be a less efficient as compared to that food chain which will be a shorter. Longer food chains are a bit less efficient than the shorter food chains. This is another ecological principle which we can derive from this. Size of population. Generally at every successive tropic level, the population of organisms gets decreased, or we can say the producers, their population will be more as compared to the these consumers. इसी तरह ये होते हैं. तो इसी तरह अगर हम बात करें longevity and size of organism, देखो, except a few terrestrial trees, shrubs and herbivores, usually the size of the organism is larger at every successive level than their preceding ones, and their lifespan is more as compared to their preceding as compared to the organism which are lying at their preceding at the preceding these tropic levels in the food chain. तो इस तरह एक और these are the इसी तरह operation at different tropic levels. देखो, an organism, it cannot be always assigned a specific position only a मतलब उसमें हम एक ही पोजीशन इसको असाइन नहीं कर सकते हैं फूड चेन में. दिस इज वाई अगर हम बात करेंगे, देखो, अगर हम टेडपोल की बात करें, टेडपोल इज ए हर्बिवोर बट द फ्रॉग इज ए कार्निवोर. यहाँ पे ऑर्गेनिज्म it is showing two different tropic levels, so we cannot always assign the same position to the frog. इसी तरह अगर हम बात करेंगे दूसरे मतलब जेकॉल जो है इट इज ए कार्निवोर एज वेल एज ए स्कैवेंजर. कार्निवोर भी है, स्कैवेंजर भी है. इसी तरह अगर हम बात करेंगे दिस इंसेक्टिवोर वोरस प्लांट्स की, मतलब पिचर प्लांट होता है या वेंस फ्लाई या पिचर प्लांट की बात जब हम करेंगे, पिचर प्लांट इट एक्ट्स बोथ एज ए प्रोड्यूसर एज वेल एज ए कंज्यूमर. वो यहाँ पे दोनों. इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, मतलब कुछ मैमल्स, मैन है, जो बियर है, तो इनमें क्या होता है, दे आर द ओमनिवोर्स. दैट मीन्स they act at different tropic levels, and these were the few of the these ecological principles which we can derive from the food chains. तो इस तरह यहाँ पे ही आज हम कंक्लूड करेंगे. आज का जो टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स एंड व्हाट आर द फूड चेन्स, इसकी वेरियस टाइप्स, इसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी वेरियस व्हाट आर द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स व्हिच वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस फूड चेन. तो इसके बारे में हमने थोड़ी सी आज बात की
So inshallah in the next topics we will proceed ahead. Till then, Allah Hafiz.